अपना एक वाला भाई। हम्म। अच्छा। 308 स्टैटिक कंपनी। बहुत बड़ा समय। एटलीस्ट क्वेश्चन तो। ओ ओ ओ प्रिपेयर बहुत प्रिपेयर बड़ा। स्टैटिक कंपनीज रोलिंग बजट फॉर द नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स। 8 माह ओ के वाह। लिए आया है। रोलिंग बजट प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो इनका क्वेश्चन पढ़ते हैं। Static company is a multinational consumer goods company. Traditionally, the company has used a fixed annual budgeting process in which it sets quarterly sales revenue targets for each of its product lines. Historically, however, if a product line fails to reach its sales revenue target in any of the first 3 quarters, the company's sales director and the finance director simply go back and reduce the sales revenue targets for the quarter just ended to make it simply look like the target was reached. Then they reach the target for the final quarter to include any shortfall in sales from the earlier quarters. During the last financial year in 31st ended 31st of August of 2016, this practice meant that managers had to heavily discount many of their product lines in the final quarter in order to boost sales volumes and meet the increased targets. Even with the discounts, however, they still did not quite reach the targets. On the basis of sales targets set at the beginning of that year, the company had also invested 6 million in a new production line in January 16. However, to date, this new production line still has not been used. Result of both these factors, static company It did not saw a quite. dramatic fall in return on investment from 16% to 8% in that year. Consequently, the managing director, MD and FD, sorry, MD, the FD and the SD have all been dismissed. So the managing director, finance director, and sales director have all been dismissed. Two key members of the Hmm. accounts department are also on sick leave due to stress and are not expected to return for some weeks. The new managing director, who is inexperienced in this industry, has been appointed and is in the process of recruiting a new sales director and new finance director. The managing director has said these mistakes, these mistakes could have been largely avoided if the company had been using rolling budget instead of manipulating fixed budgets. From now on, we will be using rolling budgets, updating our budgets on quarterly basis with immediate effect. The original fixed budget for the year ended 31st of October 2017, for which the first quarter one has just ended, is shown below. अच्छा, तो ये अपना पूरा फिक्स्ड बजट था। ठीक है। Hmm. Budget was based on the following assumption: sales volume will would grow by a fixed compound percentage each quarter. The gross profit margin would remain stable each quarter. Distribution cost would remain a fixed percentage of revenue each quarter. Administration cost would be fixed each quarter. फिक्स परसेंटेज बोला उन्होंने। Hmm. ठीक है। The actual results for the first quarter one have just been produced and are as follows. तो ये रहा इनका actual results. The new MD believes that the difference between the actual and the budgeted sales figures for quarter one is a result of incorrect forecasting of prices. However, they are confident that the four assumptions the fixed budget was based on were correct and the rolling budget should be prepared using these assumptions. Oh, okay. Nice. Hmm. Easy था मैं। चरखे मेरे को बस इतना बता स्टार्ट कैसे करेंगे मतलब वो स्टार्टिंग का देख फर्स्ट हम क्वार्टर का हमने इसका बजट ले लेंगे फिर।
देख, जो मुझे पता है क्या लग रहा है, इन्होंने बोला है कि रेवेन्यू जो है ना वो हर साल फिक्स परसेंटेज से बढ़ रहा है। तो एक काम कर ले तू, तेरे कैलसी पे ना Q2 का सेल्स डिवाइड बाय Q1 का सेल्स, जरा एक बार करके देख, तेरे को कितना आ रहा है। एक मिनट। कितना 2% से बड़ा है ना? 2% से बढ़ा है। अब ये काम करता है थर्ड, अब अभी तेरे Q3 का Q2 के साथ करके देख। हाँ बराबर। सब आओ, ओके ओके, तो ऐसे सबको करना है सब क्या? 2% से बढ़े, नहीं नहीं, सब लोग अभी 2% से बढ़े। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये अपने पास Q1 हम्म। का एक्चुअल डेटा है। तो अभी अपन Q1 के, और ये लोग बोलना चाहते हैं कि ये जो सारे अजम्पशंस थे हम्म। ना, ये सारे हम्म। बिल्कुल करेक्ट थे। इनमें कोई भी मतलब बदलाव नहीं था। तो ये सब एकदम करेक्ट है। तो अपने पास Q1 का डेटा है। तो अभी अपने को वैसे ही हम्म। बाकी के पूरे क्वार्टर का निकालने का है। अबे इजी लग रहा था। हम्म। 308, स्टैटिक कंपनी, पर्टिकुलर्स, Q2, Q3, Q4, one of 2018, 2017 data already provided। ठीक है। तो अपने पास क्या क्या बोला है, न्यू सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, फिर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये बैठता है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करने के बाद ये सारे वर्किंग्स। तो अब इसमें तो परसेंटेज ग्रोथ इन रेवेन्यू ईच क्वार्टर। सो 13,425, अरे number of the step, 13,694 growth is 2%। सो अभी मेरा यहाँ पे रेवेन्यू जो आया है वो है 14,096,8740। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पता नहीं कितना है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इसको माइनस करने के बाद जितना आता है उतना। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 705, और यहाँ पे आता है एडमिशन 202020। फिक्स्ड ईच क्वार्टर, तो मेरा Q1 में 2020 है, तो शायद मेरा हर क्वार्टर में 2020 ही आना चाहिए। वो लोग बोल रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट ने एक कांस्टेंट मेंटेन करके रखा हुआ है, उससे पहले इसको है ना 2% से बढ़ा देते हैं। अभी
ग्रॉस प्रॉफिट इज एट अ सर्टेन परसेंटेज ना, हर साल वो बोल रहे तो 537, एक मिनट इधर ही कर देता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, बजटेड सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, राहुल सर को वो क्वेश्चन का पेज नंबर भेजना, मतलब बताना। 221। 221, इसीलिए यार है। हम्म, तो अभी जीपी जो आता है वो है 5370, और यहाँ पे 5478, तो 40% का मेंटेन करके रखा हुआ है। यहाँ पे नीचे कितना आ रहा है वो सेम चीज, और नीचे आती है वो है 14096, यहाँ पे आई है 5356, 38% की है, लेकिन यहाँ पे ये सेम चीज 38% की है। सो 138 यहाँ पे मैं डाल दूंगा, total sales is equal to sales minus, so माइनस जीपी में मिल जाएगा अभी। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, बोला है डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ तो बोला है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वुड रिमेन अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ईच क्वार्टर। तो अभी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो है एक फिक्स्ड परसेंटेज ही है, डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज, तो वो है 705 डिवाइड बाय 14096, 5% का है। नाइस, तो ये है 5% का, ये भी हो गया। 7308 है, so 308, वाह क्या क्या खुला है। सो क्वार्टर 2 क्वार्टर 1, हाँ, तो 2725 ठीक है, 28 220 2819 ठीक है, 2916 2916 3015 लेट्स गो भाई। अच्छा, रोलिंग बजट तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट होता है ना, हाँ ठीक है। Discuss the problems which have occurred at static company due to previous budgeting process and the improvements which might now be seen through the use of realistic rolling budgets. Hmm, क्या लगता है? नहीं रहेगा इन केस ऑफ, इफ प्रीवियस बजट रॉन्ग रहेगा तो आगे वाला जो कंटिन्यूशन है वो भी उसी के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा। हम्म, देयर विच शुड बी अ रिवाइज नॉट ऑल टाइम, बिकॉज ऑल टाइम करेंगे तो फिर भी और मोर डीप कैलकुलेशन लगेगा। इट विल हम्म, रिक्वायर मोर टाइम ऑफ एम्प्लॉय who have been in the part of making the budget. एक्चुअली एक मिनट ना, इन लोग क्या करते थे, they used to simply go back and reduce the sales revenue targets for the quarter just ended to make it look like the target was reached.
Then they then increase the target for the final quarter to include any shortfall in sales from earlier quarters. Then they increase the target for the final quarter to include any shortfalls in sales from earlier quarters. अच्छा, तो ये लोग सालाना सेल्स कुछ और बताते थे और क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा बताते थे, लास्ट क्वार्टर में सारा का सारा ब्लेम डाल डाल देते थे. Increase the target of the final quarter to include any shortfall in the earlier quarter. Okay. ओके. So, अभी हाउ कैन दिस बी अवॉइडेड भी पूछा है ना. Improvements which might now be seen to the use of realistic rolling budgets. Because of the help of realistic rolling budgets, every quarter मैं new नहीं कह रहा कुछ targets भी will be वैसे. set. Every quarter new targets would be set and they would be achieved. um, they would be achieved accordingly. uh, क्या लगता है तेरे को और कुछ पॉइंट जो तू डाल सकता नहीं है? आ रहा है मतलब रोलिंग मेथड के लिए क्या ही बोल वही समझ में ही नहीं आ रहा. आजा, इनका सकते पढ़ते हैं. The use of fixed budgeting has caused some serious problems at static company. The fact they were using inaccurate sales forecast figures led them to invest in a production line which was not actually needed, even though they knew they were inaccurate. This unnecessary investment cost them 6 million and caused the return on investment to have to half मतलब half कुछ है. हम्म. लार्जली अवॉइडेड, ये कहाँ बोला था 6 मिनट का, नीचे बोला था क्या? हाँ, ये देखना. On the basis of the sales target set at the beginning of the year, the company also invested in 6 million in new production line. बराबर, मतलब इन्होंने गलती से नहीं, इन्होंने गलती की थी सेल्स टारगेट को दिखा के, तो इसके वजह से इन्होंने न्यू प्रोडक्शन लाइन में मतलब पैसा डाला, जिसके वजह से आरओसी फॉल हो गया, सॉरी आरओआई फॉल हो गया. फॉलो हो गया. ठीक है, मेक सेंस. Had rolling budgets been used at that time and used properly, the sales forecast for the remaining quarters would have been adjusted to reflect a fall in demand, and the investment would not have been made. Presumably, inaccurate sales forecasts would have led the business to get their staffing levels and material purchases wrong as well. This too will have cost the business money. They were forced to heavily discount on their goods in order to try to reach their targets at the end of the year, which was simply unrealistic. It can often be difficult to put prices back up again once they have been discounted. However, the actual results from the first quarter suggest that prices have increased again, which is fortunate. Improvements. The use of rolling budget should mean that a downturn in demand is adjusted for in future quarters rather हम्म. than sales simply being pushed into the last quarter, which is not a realistic adjustment. Management is forced to reassess the budget regularly and produce up to date information. This means that inaccurate management decisions can then be made, and mistakes like investing in a new production line which is not needed should not happen again. Planning and controlling will be more accurate. ये नेक्स्ट पार्ट है. नहीं, नेक्स्ट पार्ट है. ठीक है. ठीक है. हम्म. Discuss the problems which may be encountered when static tries to implement a new budgeting system. एक तो मुझे पॉइंट अभी मैंने एक एमसीक्यू में पढ़ा था कि एम्प्लॉयज आर ऑलवेज inclined towards resisting towards change. मतलब even though the new budgeting system would have been implied, employees would not be ready to accept this change in new budgeting system. मे बी. फिर
एक तो है क्या कि बोल। रोलिंग बजट इज कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट, बराबर। हम्म। हाँ, more frequent the budgeting has to be made. हाँ, Has to it is more. costly because the frequency of the budgeting of preparing the budget increases. हम्म। हाँ, ये स्टैटिक कंपनी इज स्विचिंग फ्रॉम फिक्स्ड कंपनी, सॉरी, फ्रॉम फिक्स्ड बजट टू अ रोलिंग बजट, सो skilled labor will be required in order to prepare the budget. High skilled labor will be required हम्म। to prepare the budget. और क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं रोलिंग बजट के? This must be एक मिनट। और वो उसका भी ले सकते हैं ना कि न्यू एसडी और एफडी को ये कर रही है रिक्रूट। A, उसमें भी a, कॉस्ट a तो लगेगा new उसको। MD who is inexperienced in this industry has been appointed, and in this process, recruiting a new SD and new MD. The MD has said mistakes could be largely avoided is ruling budget, instead manipulating the फिक्स्ड बजट्स। नहीं यार, मुझे पता नहीं इसमें कैसे, लेकिन मुझे लगता है ये जो पॉइंट है ना, ये अपन पहले वाले में डालना चाहिए था अपने को। डिस्कस द प्रॉब्लम्स occurred at static during previous budgeting process। ये सब अपने को उस पहले उस इसमें डालना मतलब चाहिए था। सिक मैंने लीव्स का डाला भी आ भी था। सकता था वो। हाँ, अपन ने ये क्वेश्चन ना फिर से एक बार पढ़ लिया करेंगे जब भी थियोरी आएगा ना, तो एग्जाम में अपन एक बार वो बड़ा पैराग्राफ फिर से एक बार पढ़ लिया करेंगे, और उन्हीं के कि सेंटेंसेस को एटलीस्ट कहीं कुछ कॉपी मिस पेस्ट तो नहीं करके हुआ है। डालेंगे। हाँ, क्या मतलब क्या? अपना ओवरनाइट करके। अरे हाँ, वही मतलब कुछ अगर कुछ मिस नहीं हुआ बाई चांस। हाँ, मिस ना हो, मुझे लगा यूज नहीं हुआ बोल रहा है कुछ ऐसा। नहीं। आजा फिर इनके थ्योरी पे आते हैं, पढ़ेगा। प्रॉब्लम्स ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट न्यू बजटिंग सिस्टम। द फर्स्ट प्रॉब्लम है, एक मिनट। द फर्स्ट प्रॉब्लम मे बी trying to obtain the right information needed to update the budget. बराबर। The FD has been staged and two other key finance person are off work due to stress. इसमें आ रहे। तूने बोला था। This could make it very difficult to obtain information if the department are understaffed and lacking the direction given by finance director. Staff in the finance department may not have the skill to update. The important है, ये to मैं तो update the बोला था। budget and roll it forward, having never done it before. Similarly, the sales department is without SD, and they would usually have played a key part in reviewing the budget figures for the sales forecast. Hence, it may be difficult to obtain reliable sales. Even without staffing issues, obtaining the correct information could be difficult as possible. Preparing rolling budget is new for Saturday company. Oh, huh. Staff will need to train. They are only used to prepare fixed budget. Also, this has obtained often been revised in the past to move sales into later period. Staff are not familiar with the process of updating all of their finance information again. Reviewing sales demand to realistic and forecast update the cost. This process takes time. Staff may feel resentful about having to do this again. So soon after the annual budgeting process, this would recently have been undertaken. The new MD is the new MD is the new to this industry and therefore lack experience of how it works. With this, they are confident that assumption of the original fixed budget still stand true. They are not in a good position to know that this is in the fact the case. The assumption may be wrong, and if there are, the new rolling budget will be unreliable. न्यू एमडी इज न्यू Hmm. टू द इंडस्ट्री कहाँ बोला था लेकिन इन्होंने यहाँ पर यार। कल हाँ, तो दिया inexperienced in होगा। this industry. The new MD who is inexperienced in this industry has been appointed in the process of recruiting new SD and FD, बराबर। Hmm. राइट राइट राइट, बोला था। ठीक है। Hmm.